Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very interesting story, that is the four treasure seekers. And who are treasure means khajana. Seeker means जो उस चीज को लेते हैं. So let's just begin with this story. So the title of our chapter is Four Treasure Seekers, right? And about this chapter, this four treasure seeker is basically a पचतंत्र. देखिए पचतंत्र हम लोग की वो आया करती थी, एक मैगजीन आया करती थी. इट्स अ स्टोरी बुक of a four friends who are out in search of wealth. What is wealth? Wealth means money. पैसों की तलाश में चारों के चारों friends जो हैं, they are just moving out, right? And after reaching the few miles, they find enough copper for all the four. उनको क्या मिला? Copper मिला, तांबा मिला, उन चारों के लिए इतना enough, right? And among the four friends, देखिए एक important word है यहाँ पे, that is among. Among word हम देख रहे हैं. So among is not used between two persons. Whenever we are talking about two friends, two persons means when there is a conversation between two friends, we always used to write between, right? But if it is beyond two persons, means if we are talking more than two persons, that is among is used, right? Then one of them, he decides to take the copper and returns other, and three other decided to take further to test their destiny. कुछ तो ये था, एक का कि उसको टेस्ट करते हैं, दूसरे का ये था कि हम उसको टेस्ट करेंगे अपनी डेस्टिनी में. तीन के तीन डिसाइडेड, तीनों ने कुछ और डिसाइड किया और एक ने कुछ और. एंड व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट? लेट्स जस्ट रीड. तो फोर ब्राह्मण्स हैं, दे लिव इन अ सर्टेन टाउन, एक टाउन में रहते हैं. एंड दे शेयर अ वेरी गुड गुड फ्रेंडशिप अमंग देमसेल्फ. देखिए देमसेल्फ है, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. बेसिकली क्या है? पोजेसिवनेस, अपनापन. अब हमारा देमसेल्व्स, खुद की बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी. एंड हाउएवर दे वर अटरली पुअर, और बहुत ज्यादा क्या थे? पुअर थे, राइट ना. दे डिस्कस देयर कंडीशन एंड कंक्लूडेड, उन्होंने अपनी कंडीशंस को कंक्लूड किया एंड डिस्कस किया. एंड दे कंक्लूडेड, लीव अस दिस प्लेस, ये वाली प्लेस छोड़ते हैं. एंड व्हेन वी आर लैंग्विशिंग इन पॉवर्टी, और जब वो लोग क्या कर रहे थे? दे आर लाइक लैंग्विशिंग इन पॉवर्टी मीन्स उस पॉवर्टी वाले हालातों में वो जूझ रहे थे, उसको झेल रहे थे. लेट्स गो जस्ट समवेयर एल्स एंड प्रॉस्पर, कहीं और चलते हैं. लेट्स गो फॉर ग्रो फ्रॉम हियर एंड वी विल प्रॉस्पर ओवर देयर. प्रॉस्पर मीन्स ग्रोथ, राइट. आफ्टर मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दे स्टार्टेड ऑन देयर ट्रैवल, उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया. और कुछ समय के बाद दे रीच्ड द टाउन वेयर दे डिसाइडेड टू स्टे फॉर सम टाइम. वो एक टाउन पहुंचे और दे डिसाइडेड कि अब वो वहां पे कुछ समय के लिए दे विल स्टे ओवर देयर. नाउ देयर वाज अ लॉर्ड शिव टेम्पल नियर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. रिवर के किनारे एक लॉर्ड शिव का टेम्पल था. उन्होंने वहां वर्शिप किया, रिवर में बात किया. एंड इट वाज देयर, और उन्होंने वहां पे किससे मिले? एक योगी से, राइट. एंड accompanied him to his hermitage. what do you mean by hermitage? मीन्स अपनी झोपड़ी के तरफ उसको, वहां तक उसको क्या किया? मतलब उसको वहां तक उसको सी ऑफ कर दिया. नाउ द योगी इंक्वायर, हु आर यू? आप कौन हैं? एंड आप कहाँ से आए हैं? एंड व्हाट डिड यू कम इन विद इन दिस टाउन फॉर, और तुम इस टाउन में क्यों आए हो? आप लोग कौन हो और किस पर्पस के लिए आए हो? दे एक्सप्लेन देयर कंडीशन टू योगी, उन्होंने अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करी, दैट दे आर एक्सट्रीमली पुअर एंड दे हैव माइग्रेटेड टू दिस प्लेस टू गेट प्रॉस्पर. Now we took his journey to earn money. We have took this journey. हम यहाँ तक आए हैं जिससे कि हम पैसे कमा सकें. We are in a state of poverty. What do you mean by poverty? Means poor. बहुत ही ज्यादा क्या है? Poor है. That we would have died in our town. हम इतने गरीब हैं कि हम मर सकते हैं अपने टाउन में. Since you are an accomplished yogi, आप एक अच्छे से पंडित हैं. We believe you we believe you must be gifted with wonderful powers. आपको बहुत अच्छी powers दी होंगी भगवान ने. Please guide us to the path how we can earn money. They continued, and we dedicated ourselves to you and are ready to undertake whatever you guide us. कि हम आपकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. Please just help us out and guide us that how we can earn money. On observing their pitiable condition, उनको बहुत ही तरस आ गया. The yogi agreed and he took out 4 cotton wicks and grave उन्होंने 4 कॉटन की विक्स निकाली एंड गेव ईच ऑफ देम अ विक, और एक एक विक चारों को दे दी. नाउ ही सेड, विद द विक इन योर हैंड जस्ट टेक द पाथ दैट टेक्स यू टू हिमालयाज, जो कि आपको हिमालयाज पे लेकर चला जाएगा. कीप वॉकिंग टिल वन यू एक्सीडेंटली ड्रॉप इट्स विक. चलते चलिए जाइएगा टिल वन ऑफ यू एक्सीडेंटली ड्रॉप हिज विक, की मतलब उनकी छड़ी क्या हो जाएगी? अपने आप ही गिर जाएगी. एंड the location where the wick drops accidentally would be the location where you are finding the treasure. अगर आपकी ये छड़ी कहीं पे भी आपसे एक्सीडेंटली गिर गई, बस आप ये समझ लीजिएगा कि वहीं पे ही है
छुपा हुआ ट्रेजर, खजाना। नाउ आप वहां पे डिग करिएगा और अपने होम में जो भी आपको मिले आप उसको कलेक्ट करके अपने घर पहुंच जाइएगा। नाउ द फोर ब्राह्मण्स ने अपनी ब्लेसिंग्स ली एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स द हिमालयाज की तरफ वो लोग चलने लगे। नाउ दे ट्रैवल फॉर डेज, कुछ टाइम तक उन्होंने चला। व्हेन वन ऑफ देम ड्रॉप हिज विग, एक्सीडेंटली उनका ड्रॉप विग जो है वो गिर गया। ही डग द प्लेस वेयर द कॉटन विग हैड फॉलन, जहाँ पे वो कॉटन की विग गिर गई थी उन्होंने उसको क्या कर दिया, उसको डग करना स्टार्ट कर दिया और देखा उन्होंने क्या है, ट्रेजर क्या फेल हुआ है, ट्रेजर खजाने में क्या है, कॉपर, राइट। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, जस्ट कम ऑन, देयर इज टू मच ट्रेजर फॉर फोर ऑफ अस कि हम लोग इसको लेकर अपने घर जा सकते हैं। जस्ट लेट अस कलेक्ट, कलेक्ट करो और अपने घर चलो। वी आर नाउ रिच, यू नॉट टू गो, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी रिच बिकॉज वी हैव कलेक्टेड इनफ कॉपर। नाउ the other three they discussed and said, you were destined to the copper treasure, कि तुमको क्या लगता है तुम्हारी डेस्टिनी क्या, you are destined to only copper treasure, कि सिर्फ copper treasure ही चाहिए। you may be destined to rich treasure, कि कुछ और अच्छा खजाना भी मिल सकता है। you may collect the copper all you can and return home, we will continue with our journey, one of the friend is saying, कि तुम लेकर जाओ, तुम्हें लग रहा है यही खजाना, हम तो अपनी कंटिन्यू करेंगे जर्नी और आगे देखेंगे कि कोई ट्रेजर तो नहीं मिल सकता। Thus the Brahmin collected his treasure and started traveling homewards. कुछ एक ब्राह्मण जो है अपने घर की तरफ चलने लगा। While the rest of the three Brahmins they continued their journey, their wicks in their hand. वो अपनी छड़ी पकड़ के अपने आगे जर्नी के लिए चले गए और एक अपने घर पे चला गया जितना कॉपर मिल गया। Now they traveled for few more days when one of them dropped his wick accidentally. फिर वो कुछ चलने लगे, फिर एक और की छड़ी नीचे गिर गई एंड ही डग द प्लेस वेयर द कॉटन विक हैड फॉलन, और फिर वापस से उन्होंने देखा कि ट्रेजर क्या हो रखा है, फिल्ड विद सिल्वर, अब की बार चांदी है। Now he asked his friend, just come on, there is too much of chandi, too much of the treasure for three of us, we will just collect it and move to our place. Now let's just collect and go home, we are now rich, you need not to go further. Again they are saying, exaggerating the same words. Now the other two discussed and said, you are destined to silver treasure only, क्या तुम्हें सिर्फ सिल्वर ट्रेजर ही चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तुम लेके चले जाओ, we'll continue the journey. You will be destined to richer treasure, may you collect all the silver and you can return home and we will continue with our journey, right. Now the Brahman collected his treasure and start traveling towards the homework, while the rest जो है again continued their journey with wicks in their hand. Now a few more days of traveling, अब कुछ के बाद फिर से एक छड़ी गिरी और उन्होंने वापस से उसको किया और वापस से उस ट्रेजर को खोदना स्टार्ट किया एंड दिस टाइम दे आर blessed with gold. Now he asked his friend, just come on, there is too much treasure over here for two of us. Let us collect and just go to the home, and we cannot continue our journey further. The fourth Brahmin replied, stupid, you don't understand what is happening. क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? सबसे पहले कॉपर था, फिर सिल्वर था, देन गोल्ड, यू आर ऑल डिस्टिंक्ट दिस ट्रेजर, सबको अपनी बारी बारी जिसकी किस्मत में जो ट्रेजर था वो उसको मिल रहा है। Next time, I'm sure I'll find a richer treasure of diamonds and pearls. You may go home, but I will continue my journey further. And I am destined to rich haul of treasure. मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा इस treasure का हकदार हूँ। Now, companion said, you may continue your journey, but I will not return home. And this time, I won't be returning the home. I will come along with you. I will stay here and guard this treasure of gold. मैं इस gold के treasure की रक्षा करूंगा यहाँ पे and we will return home together after you return. जब तुम वापस आ जाओगे we both will go together to our places. Now, fourth Brahmin they continue his journey with its wick in his hand. अपने हाथ में उसके wick हाथ में है. After traveling a few more days, he felt tired. He was feeling too tired. He was suffering from the tremendous heat. वो उसको गर्मी से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी. And he got very thirsty. और उसने अपना रास्ता भटक लिया एंड स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन सर्कल्स, और एक ही जगह पे क्या होने लगा, वापस घूमने लगा। नाउ ट्राई टू फिगर आउट द राइट डायरेक्शन, ही केम अक्रॉस अ मैन विद अ whirling wheel अराउंड हिज हेड, मतलब उसके दिमाग में एक ऐसा दिमाग चल रहा है एंड ही इज सेइंग कि प्लीज जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट द करेक्ट पाथ। नाउ हिज बॉडी वाज स्मियर्ड विद ब्लड, ब्लड के साथ लाइक खून इकट्ठा होने लगा जगह जगह। Now the fourth Brahmin was so thirsty that instead of helping the man, उसको हेल्प करने की बजाय he asked, please tell me where I can get water, कि मुझे कहाँ से पानी मिल जाए। You are whoever you are with the wheel around your head, please tell me quickly, जल्दी से मुझको बता दीजिए कि पानी कहाँ है।
Now, no sooner he uttered these words than the wheel shifted from the other man to his fourth Brahmin. और वो wheel कहाँ shift हो गया? Fourth Brahmin के पास. It being whirling around the whirling means घूम रहा था around the fourth Brahmin head and it pained beyond endurance. बर्दाश्त से बाहर हो रहा था उसके दर्द. Now he cried, "What is the meaning of this? Why the wheel attached itself to my head? कि मेरे सर पे क्यों वो attach हो गया है? Please get me, please tell me out that how can I get rid of this? ये इसको please मेरे सर से हटाओ." Now the man relieved from the wheel and said, replied, "When someone carrying a magical cotton wig, किसी के पास क्या थी? Magical cotton wig थी, will come here and speak to you. Only then you will be freed from this wheel and attach itself to him." कि अगर ये मैजिकल जो आपके पास विग थी, ये आएगी खुद से, ये बोलेगी, एट दैट टाइम आप इससे आप क्या हो सकते हो? अटैच रिवील हो गया, इससे आप रिमूव हो सकते हो। नाउ ही एक्सप्लेन्ड, "आई डू नॉट रिमेम्बर आई हाउ लॉन्ग आई हैव बीन हियर", कि मैं यहाँ पे कब से हूँ। "इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग राम एंड आई प्रोक्योर्ड अ मैजिकल विग फ्रॉम योगी टू गेट rid self ऑफ पॉवर्टी", कि इतना समय हो गया है, मेरे को ये विग मिली है किसी प्रीस्ट से, योगी से, कि मैं पॉवर्टी से हट जाऊँ। नाउ आउट ऑफ ए ग्रीड आई कंटिन्यूड माई जर्नी, इफ आई गॉट, ऑल्दो मेरे को ट्रेजर मिल चुका था बट स्टिल आई वॉज लाइक, मैं और लालची हो गया। एंड आई मेट अ मैन अंडर द सेम सर्कमस्टेंस, दैट इज हाउ आई गेट व्हील ऑन माई हेड फ्रॉम हिज। मैंने देखा है कि ऐसा ही एक और बंदा था और वो भी यही कुछ कर रहा था। सो यू शैल बी फ्री फ्रॉम हंगर, थर्स्ट, एजिंग और डेथ, बट यू हैव टू एंड्योर द पेन। तुम्हें दर्द तो झेलना पड़ेगा ही, तभी इन सब चीजों से तुम फ्री होगे। नाउ he continued, "It was Kuber." ये कौन था? God of wealth who prepared this device and no one would dare approach this place and steal his treasure. He's saying कि ये कुबेर ने ही डिजाइन किया है और यहाँ का खजाना किसी की हिम्मत नहीं है कि वो लेकर चला जाए। Only a man with a magical wig can enter this place. सिर्फ जिस बंदे के पास मैजिकल विग होगी वही यहाँ पे एंटर कर जाएगा। Now the other man who was relieved from the wheel took his leave. अपना अपना क्या किया? छुट्टी हो गई उसकी। द फोर्थ ब्राह्मण वॉज लेफ्ट अलोन। अब फोर्थ ब्राह्मण वॉज टोटली लेफ्ट अलोन। हिज कंपेनियन वॉज वरिड एंड इट टेक टू लॉन्ग, कि उसका फेलो अभी तक आया ही नहीं है वापस। ही डिसाइडेड टू फॉलो एंड रीच द प्लेस जहाँ पे उसका फ्रेंड बहुत ही ज्यादा पेन में सफर कर रहा था, विद ब्लड स्मीयर्ड ऑल ओवर एंड व्हील whirling अराउंड हिज हेड, कि उसका सर बहुत गंदी तरीके से घूम रहा है। नाउ थर्ड ब्राह्मण इंक्वायर, "व्हाट हैज हैपेंड टू यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ?" विद टीयर्स इन हिज आई द फोर्थ ब्राह्मण ने रिप्लाई किया, "आई वाज डिस्टिन्ड फॉर दिस, मेरी किस्मत में यही था। दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय फेथ, ये मेरी किस्मत का रिजल्ट है।" एंड ही टोल्ड द एंटायर स्टोरी ऑफ द व्हील टू हिज फ्रेंड। उसने उस व्हील के बारे में सारी स्टोरी अपने फ्रेंड को बताई। एज देयर वाज नथिंग टू नथिंग हिज कंपेनियन कुड डू, ही प्रिपेयर्ड टू लीव। अब उसके पास कुछ नहीं है तो ही डिसाइडेड नाउ ही शुड लीव। इवन बीइंग अ स्कॉलर यू लैक द सेंस टू कंट्रोल योर ग्रीड, कि आपको, आप एक स्कॉलर हैं, एक पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप लालची बन रहे हैं। यू वांटेड डायमंड्स एंड पर्ल्स व्हेन यू ऑलरेडी हैड गोल्ड, अगर तुम्हारे पास जो है उससे तुम खुश नहीं हो, एंड यू वांट डायमंड्स एंड पर्ल्स, बट देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग यू द कंपनी फॉर नॉट बीइंग अ ह्यूमन कैन, मतलब अगर एक आप अच्छे ह्यूमन होकर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग यू द कंपनी फॉर नो ह्यूमन बीइंग कैन डू एनीथिंग टू हेल्प यू एंड आई शुड डिपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए। Thus his friend started his journey to return home and the fourth Brahman को अकेला छोड़ दिया। And they indeed say that greedy only brings misery. अगर आप बहुत ज्यादा लालची हो जाएंगे, it will definitely give you pain. Misery means pain. So I hope you all understood this chapter. This chapter was quite interesting and it was like a fable which teaches us that we should not be greedy at all the time. We should be satisfied with whatever having with we are having with, and please keep doing hard work so that you can achieve everything in your life. And to achieve the hard work, please study hard so that you can make your parents feel proud of them, proud of yourselves, as well as you should feel proud of yourself also and for them also. And please keep studying hard and stay blessed. Thank you.